सो आमे लास्ट क्लास रे 40 जाय डिस्कशन करिथिले सो 39 जाय 42 आमे करिवार अछि क्वेश्चन नंबर 40 which one of the following statement is not correct with reference to rights fundamental right को नेकी कोटा correct नहीं एटा में आई थिंक करी देथिले कौन आंसर थिला रा 40 रो B answer हवा okay these include all the claims that a person consider necessary and desirable okay so B amara thila correct answer next question 41 consider the following statement with reference to right to freedom of religion कौन हवा देखो कौन कमेंट सेक्शन में कहूछ The Constitution provides the right to individual as well as collective freedom of religion. The state is prohibited from collecting any fee for administration of any religious institution and educational institution administered by the state, but firm under the trust is permitted to provide religious instruction. So, हमरो एक फास्ट होची हमरो ठीक अछि काहे कि ना हमरो आर्टिकल 25 कोन कहूची आर्टिकल 25 ए कहूची आर्टिकल 25 कोन कहूची ना इंडिविजुअल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जे तमे निज इच्छा रे जो धर्म चाहिबो नै परिबो जो रिलीजियस प्रैक्टिस करि परिबो सो एटा हमर इंडिविजुअल आउ 26 कोन ना हमर जोटा कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन कथा हमें कहूची सो ए जोटा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड राइट टू इंडिविजुअल जोटा आर्टिकल 25 रे यू कैन प्रैक्टिस you can profess any religion okay as well as collective freedom of religion कथा हमरो जो हमें कहूचे सपोज गोटे ट्रस्ट कथा कहूचे हमें कहबो हमरो जेमति कि रामकृष्ण मिशन हैला तो ए जोडा का हमरो सेटा कलेक्टिव से माने गोटे रिलीजन को प्रोपागेट करूचे तो दीटा को ठीक अछि आर्टिकल 26 रे and article 25 ta amar individual katha कहूची second katha the state is prohibited from collecting any fee for the administration of any religious institution देखो एटा हमर भूल अछि एटा हमर कोन लिखा अछि जे state prohibit to collect tax not fee tax और fee भितरे डिफरेंस अछि मु कहबी एबे तमे जाउछ कोणार्क मंदिर जाउछ 50 टिकट करूछ से माने कलेक्ट फी कलेक्ट करछथि नै कोन पई करछथि ना टू मेंटेनेंस सिटीकार सिक्योरिटी हला ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज हला तो नीट एंड क्लीन रखिबा पई तो से थी पई हमर से 50 टका निया जाउछि दैट इज नॉट टैक्स किंतु स्टेट चाहिले फी कलेक्ट करि परिबो जो 50 टका फी हमर नउछि सेडा करि परिबो फी इज नॉट प्रोहिबिटेड बट टैक्स इज प्रोहिबिटेड okay so it जो लिखा है स्टेट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम कलेक्टिंग एनी फी प्रोहिबिटेड नहीं से माने कोन से टैक्स कलेक्शन करि परिबेनी सेटा प्रोहिबिटेड ओके किंतु आमे जो कहूचे जे आमे 50 टका देई कि जाउचे ता भितर को तो सेटा हमर कोन ना टू मेंटेन द सराउंडिंग हला सिक्योरिटी हला हमर फैसिलिटी ड्रिंकिंग वाटर ए सब गुडा के पई तो सेटा से कलेक्ट फी करि परिबे तो ए स्टेटमेंट जो अछि प्रोहिबिटेड नो फी प्रोहिबिटेड पई हमर हेनी टैक्स प्रोहिबिटेड पई हमर हेछि सो एटा हमर रॉन्ग अछि तापरे एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द स्टेट बट फॉर्म अंडर ट्रस्ट इज परमिटेड टू प्रोवाइड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन हमें जदी कहबो हमर जोडा को पर्टिकुलरली स्टेट द्वारा चालुची माने तार फंड माने रिकॉग्नाइज अछि किंतु गोटे ट्रस्ट द्वारा चालुची तमे पर्टिकुलरली जदी कहबो कोठी सपोज हमरो मद्रासा स्कूल गुडा को
ताको स्टेट रिकॉग्नाइज करूची किंतु सेठी तांकर मुसलमान रो पूरा रिलीजियस पाठ पढ़ा पढ़ी करछि ओके तेणु सेही केस रे हमें कहूचे जे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जोटा कि स्टेट रिकॉग्नाइज करूची किंतु सेठी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन गुडा का हमरा देई परिबे सो एटा ठीक अछि सो आंसर हबा कोन 1 and 3 सी हे जबा हमरा करेक्ट आंसर बुझी परला कार किसी डाउट अछि एते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 consider the following statement with reference to fundamental duty in the Indian constitution they are inspired by the Irish constitution the original constitution consists of 10 fundamental duties only they are incorporated based on the recommendation of the first administrative reform commission हां हबा आंसर आरो सर डी आंसर कोन हबा डी इज द करेक्ट आंसर कोडा भी हमरो ठीक नहीं को गोटे भी हमरो ठीक नहीं हमें जानि छे फंडामेंटल ड्यूटी ओके एटा में कोड हानि छे यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन माने रशिया जेतोले हमर ई स्टाइल वाज रशिया बोली कहूचे यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन मानि छे एटा गोटे कमिटी बसतिला जार ना होची स्वरण सिंह कमिटी ओके ए स्वरण सिंह कमिटी रा रिकमेंडेशन रे एटा हमरो 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे हमर एटा आडे स्वरण सिंह कमिटी रिकमेंडेशन टा ओपीएससी रे बहुत तरह पड़छि वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन माने रखिबा हमर फंडामेंटल ड्यूटी टा हमें कोड वाणी छे यूएसआर कॉन्स्टिट्यूशन वाणी छे नॉट इरिश कॉन्स्टिट्यूशन हमर डीपीएसपी वाणी छे जोटा कि हमें कहूचे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो एटा हमर कोन कोड वाणी छे ना हमर यूएसआर कॉन्स्टिट्यूशन स्वरण सिंह कमिटी रिकमेंडेशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे एटा ऐड करा गला आ पे गोटे सेपरेट पार्ट ऐड करा गला से पार्ट रो ना होची कोन ना 4A आर्टिकल नंबर केते ना आर्टिकल नंबर होची 51A सो पार्ट 4A आर्टिकल नंबर 51A एथिरे ऐड करा गला जेतले प्रथमे हमर ए जो 10टा रिकमेंडेशन हमर ऐड करा गला सेते बेले हमर प्रथमे 10टा थिला किंतु 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे लास्ट 11 नंबर टा ऐड करा गला 11 नंबर टा मु कोन कहितली that is the duty of the parents to send their children to the school the parents मानकर ड्यूटी to send their children to the school okay तो एटा हमर होची कोन ना 86 अमेंडमेंट एक्ट 2000 बुझी पाला ना भल से मन रखिबो जे एटा हमर यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन आसला स्वरण सिंह कमिटी रिकमेंडेशन है पार्ट 4A रे अछि आर्टिकल 51A 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे हमर ऐड कराइतला सेते बेले 10टा ऐड करा गला एंड और 11 नंबर टा 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे हमरा ऐड कराइतला सो सेकंड जो पहिले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन 10 फंडामेंटल राइट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन एटा नथिला एटा को ऐड करा गला 1976 रे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन तो 1949 रे आसला तो सेते बेले फंडामेंटल ड्यूटी किछि नथिला तो एटा 1976 रे आसला सो द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्टेड ऑफ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज एटा रॉन्ग अछि थर्ड एटा मु कोन कहली को कमिशन रो रिकमेंडेशन रे स्वरण सिंह कमिटी रो रिकमेंडेशन सो ऑल 3 आर रॉन्ग अछि तो आंसर कोन हेजबो 1 2 3 ऑल आर रॉन्ग बुझी परलो नि कार किछि डाउट अछि सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो करिवा which of the following correctly explain the concept equality before law इक्वालिटी बिफोर लॉ को नहीं कि को कांसेप्ट हम ठीक अछि absence of special privilege in favor of any person equal jurisdiction of all to ordinary law of the land administered by ordinary law of the court no person is above law आंसर कोन हबो मनस्मिता डी देवस्ती डी पंकजनी डी ओके डी ओके करेक्ट आंसर होची कोन ना हमर डी एटा हमर जो हमें कहले इक्वालिटी बिफोर लॉ हमर फंडामेंटल राइट रो राइट टू इक्वालिटी हमें जो कहले राइट टू इक्वालिटी 14 रु केते राइट टू इक्वालिटी केते 14 रु 18 14 रु 18 ओके सो इक्वल बिफोर लॉ टा केते नंबर अछि 14 नंबर अछि एई 14 नंबर रे दीटा पार्ट अछि इक्वल बिफोर लॉ एंड इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉ लॉ आगे समस्त समान इरेस्पेक्टिव ऑफ योर
स्टेटस तमे वीआईपी हुआ कॉमन लोक हुआ रिच हुआ पुअर हुआ समस्ते लॉ आगे समान तुमको किसी स्पेशल प्रिविलेज दिया जीवन जे तमे वीआईपी बोली तुमको गोटे जेल रे रखा जीव तुमको एसी रूम रे रखा जीव आ तुम कॉमन लोक जनरल रूम रे रखा जीव सेमति सो लॉ आगे समस्ते समान एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज फेवर ऑफ एनी पर्सन लॉ आगे समस्ते समान तो कहा को स्पेशल प्रिविलेज और बेनिफिट प्रोवाइड करा जीवन इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डिनरी लॉ जदी तमे भूल करिचो ओके जदी तमे भूल करिचो देन इक्वली तमरो ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड जहा छी ताको इक्वल पनिशमेंट तेनु सपोज तमे करप्शन केस रे फसी तमे लालू प्रसाद यादव हुआ किबा लालू हुआ 2 वर्ष तमे जेल सो लालू प्रसाद यादव तिहाड़ जेल गले 2 वर्ष तेनु ऑल आर इक्वली सब्जेक्ट्स टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड ओके तेनु समस्त को इक्वली ट्रीटमेंट करा जिवो इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉ एंड इक्वल बिफोर द लॉ नो पर्सन इज अबव लॉ ठीक अछि सो आंसर कोन हे जिवो 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर एटा हमरा ओके बुझी पल्लो अच्छा इथिरे एक्सेप्शन किए ए राइट टू इक्वालिटी रे हमें कहले इक्वल बिफोर लॉ समस्त को प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नर president of president governor कहले there cannot be you cannot take any criminal proceeding above माने against president और governor का against कौन सी criminal proceeding तमे नहीं परिबो नहीं ओके सो आउट जो स्टेटमेंट मु कहू छी इज फंडामेंटल राइट इज परमानेंट और सैक्रोसैंक्ट फंडामेंटल राइट ता सैक्रोसैंक्ट की परमानेंट की no sir नो आमे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हमर रही छी किछि हमर कोन एक्सेप्शन अछि तो सैक्रोसैंक्ट नुए और परमानेंट नुए जेमति हमें कहले जे तमरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अछि तमे किछि भी कवर करि परिबो किंतु एबे वार चलिछि ता बदले जाय कि तमे जदी हमर जोठी मिलिटरी को पोजीशन अछि तमे जाय कि वीडियो करिवो दैट इज अगेंस्ट द नेशनल सिक्युरिटी अगेंस्ट रही जाउछि तो तमर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अछि बोली तमे जहा मन ता करि परिबनी हमर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगे जाय परिबो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन रु सिक्युरिटी दृष्टि रु पब्लिक हेल्थ मोरालिटी ए सब दृष्टि रु हमर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा जाय परिबो सेति पय हमर कोआ जाउछि जे फंडामेंटल राइट आर नॉट परमानेंट और सैक्रोसैंक्ट ओके बुझिलो नाउ क्वेश्चन नंबर 44 जुडिशियल एक्टिविज्म which one of the following statement best defines the term judicial activism ठीक है पढ़ो एटा को कोन कोन लिखा जाय छी कारण एबे जो क्वेश्चन पढुची डिफिकल्ट लेवल ला पढुची एंड वेरी माने पढिबा बुझिबा और करबा डिफिकल्ट पढ़ो ठीक जुडिशियल एक्टिविज्म होची कोन ना प्रोएक्टिव ने शब्द जुडिशियल एक्टिविस्ट किया कहा को कहबा ना जे सबले प्रोटेस्ट करे कोन पय तमे काम करूनी गवर्नमेंट एटा करनी सेटा करनी करी कि प्रोटेस्ट करंती एक्टिविस्ट माने ना नहीं तो जुडिशियल एक्टिविज्म होची से प्रोएक्टिवली हमर कोन करे ना जदी गवर्नमेंट रो पॉलिसी किछि आनुनी जदी गवर्नमेंट किछि काम करूनी तो ये निजे गोटे हमर कोन हबो ना लेजिस्लेशन हो कि गोटे प्रोसीजर नै केसबो सपोज मु एग्जांपल तुमको गोटे दउची फॉर एग्जांपल हला हमर वर्क प्लेस रे सेक्सुअल हरासमेंट पे कोनोसी प्रोसीजर नथिला तो सेति पई सुप्रीम कोर्ट कोन कला ने गोटे विशाखा गाइडलाइन आनिला जोथि कि जो वर्क प्लेस रे सेक्सुअल हरासमेंट होची ता पे कोन प्रोसीजर जेहेतु हमर गवर्नमेंट ता पे किछ आनिनी सुप्रीम कोर्ट गोटे गाइडलाइंस बनेतला विशाखा गाइडलाइंस बोले हम कहूचे तो एटा कोन प्रोएक्टिवली सुप्रीम कोर्ट ता तरफ रु कला तो एटा को हम कहबा गोटे माने एग्जांपल ऑफ जुडिशियल activism so judicial activism is an active interpretation of the existing legislation by a judge made with a view to enhance the utility of that legislation for social betterment तेनु social रो betterment पई माने proactively यदि गवर्नमेंट किछि न करूछि निजे करो सेटा को हम कहूछि judicial activism judicial review कोन ना judicial review होछि जे गोटे लॉ आसिला परे सेटा को चेक करबो whether it is within the constitutional boundary or not एटा कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेशन करूछि कि तो जदी वायोलेशन करूछि तो हमर कोन करबो ना सेटा को नॉल एंड वॉइड कर दबो केते नंबर आर्टिकल हम जुडिशियल रिव्यू कहिथिले 13 ओके आर्टिकल 13 होछि हमर जुडिशियल रिव्यू ओके
Next question होची consider the following statement with reference to article 14 of the Indian Constitution. Article 14 sorry 8 article 18 ने हमरो कोन अछि? Abolition of a title. Okay, so article हमारा 18 होची abolition of title. Abolition of title माने आगुरु जो राजा महाराज अधिराज ए भलिया टाइटल दिया जातला से सब को abolition करा देछि आ एबे तमे कोनसी फॉरेन टू टाइटल नै परिबनी विदाउट गवर्नमेंट रो परमिशन ले आसी किंबा तमे गवर्नमेंट रो परमिशन बिना परमिशन ने कोनसी गिफ्ट तमे कोनसी फॉरेन जो कंट्री तमे एक्सेप्ट करि परिबन. ओके, सो वेरी इंपोर्टेंट माने रखि थाओ abolition of हमर कोन टाइटल्स होची हमर 18. So the foreigner holding an office of profit under the state cannot accept any title from any foreign state without the consent of the president. Yes, first statement मु कहली ठीक अछि तमे विदाउट गवर्नमेंट रो कंसेंट रे कोनसी हमर कोन करि परिबनी करि परिबो नाही. ओके, national award instituted by government are not violative of article 18. जो नेशनल अवार्ड को उडा हमें कहले भारत रत्न दिया जाउची, पद्म भूषण पद्म विभूषण दिया जाउची, पद्मश्री अवार्ड एगुडा हमर नेशनल अवार्ड इज एटा हमें कहले हमें ओडे टाइटल देथिले भारत रत्न एलके आडवाणी कि भारत रत्न तेंदुलकर. तो एटा कोन गोटे टाइटल्स ता जो कहले एटा अबोलिशन ऑफ जो टाइटल्स कथा कहछ हमें तो टाइटल्स देले whether it is violative of हमर आर्टिकल 18 की एडा तार आर्टिकल 18 को वायोलेशन करूची ना करूनी? नो सर. ओके, तो एटा हमर करूनी काहे कि ना आमे एटा जनकर टैलेंट को रिकॉग्नाइज करिक दउची. ओके, आमे कहूचे जे तेंदुलकर कंट्रीब्यूशन माने हमर कंट्री को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म रे रिकॉग्नाइज देछि क्रिकेट रे. ओके, कि आमे कहि परिबा जे हमर एलके आडवाणी आमे कहिबा किंबा आमे कहिबा अटल बिहारी वाजपेयी एडमिनिस्ट्रेशन ने तंकर ओडे कंट्रीब्यूशन देश को अछि ओडे न्यूक्लियर कंट्री करछंती एते वर्ष प्राइम मिनिस्टर रहन तंकर कंट्रीब्यूशन अछि तो तांको सेति में आमे टाइटल्स देइछे. तो भारत रत्न हो पद्मश्री पद्म भूषण हो एगुडा जो टाइटल्स दिया जाइछि ओडे स्पेशल अचीवमेंट जने स्पेशल सेक्टर रे करिछि. लता मंगेशकर आमे कहले जे वो सिंगिंग जो सेक्टर आमे कहिबा जे वन ऑफ द माने फाइनेस्ट पर्सन आमे कहबा तो तांको रिकॉग्नाइज करी के आमे से पर्सन को आमे गोटे रिकॉग्नाइज करछे तांको टैलेंट आ तांकर अचीवमेंट पाई. ओके, किंतु तमे जो भारत रत्न पद्म भूषण पद्म विभूषण देलो यू कैन नॉट यूज दैट बिफोर योर नेम. तमे निजे कोडी सिग्नेचर कला बेले लिखि परिबनी कि भारत रत्न तेंदुलकर जदी केही यूज करि परिबनी पद्मश्री हमर तमे कहि परिबनी कि हमर एबे हमर पद्मश्री पाइछंती जेमिति कि हमें कोन कहले अशोक महापात्र पाइछंती हमें डॉक्टर नीरो सर्जन जो डॉक्टर थी तेनु तमे निजे लगेई परिबन जदी लगेइलो हमर माने टाइटल निया है जबो माने जो हमर दिया जायछि रिवार्ड हम सेटा को निया जबो. सो यू कैन नॉट यूज एज ए सफिक्स और प्रीफिक्स ना पूर्व तमे लगेई परिबन. ओके, सो एइडा हमर कोन हो ना दीटा को ठीक अछि. ओके, जे विदाउट गवर्नमेंट रो परमिशन तमे कोनोसी फॉरेन टाइटल्स और गिफ्ट और काइंड और कैश किसी माने तमे न पड़. सेकंड कथा हला ए जो नेशनल अवार्ड जोडा को रहिला. ओके, भारत रत्न पद्म भूषण पद्म विभूषण एइडा हमर तमे कहबा टाइटल त दिया होन ए टाइटल दिया हला एटा वायोलेशन नै कारण हम ताको स्पेशल रिकॉग्नाइज करी के हम एटा दोछि. सो आंसर कोन हे जिबा हमर सी हे जिबा हमर करेक्ट आंसर. सो ए क्वेश्चन हमें करिचे कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स हमें सीरियल नंबर कहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आउ को अमेंडमेंट रे कोन हेतला सब गुडा को परीक्षा रे पडितला. देखो हमें पॉलिटी रो जेतिकटा टेस्ट करिबा 500 क्वेश्चन सेफ्टी के पढी दियो 25 टा का क्वेश्चन ता भीतर आसी गारंटेड मु तुमको कारण कांसेप्ट हो जेति की ईच एंड एवरी कांसेप्ट हमें कवर करिथिबा ही करते यदि एति के करिवो 23 26 टा क्वेश्चन जहां भी पढिबा आराम से करितबो. ओके, तेनु ईच क्वेश्चन को बीट बाय बीट करबा 5 थरा करबो. आउ ए वर्षरा प्रीलिम होची आर पार लड़ी मु तुमको डे 1 रु कहिची. आर वर्ष इंटरव्यू को जेति पिला जाई नथिले 1366 पिला एथरा प्रीलिम रे ताठू कम पिला पास करिवे.
तो ए वर्षर प्रीलिम इज इक्विवेलेंट टू लास्ट ईयर इंटरव्यू संगे समान ओके तेणु भल से पढ़िबो प्रीलिम जे पास कला तार एथर रैंक पक्का ओके प्रीलिम एथर लड़ाई होची प्रीलिम रो एथर लड़ाई मेन नुहे कि इंटरव्यू नहीं एथर लड़ाई होची प्रीलिम रो तेणु ए जो 2-3 मास रहिला जीजान लगे कि मोर फोकस करा प्रीलिम रे नहले 1.5 वर्ष गला आउ 1.5 वर्ष वेट कर 2027 को ओके सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 101st अमेंडमेंट एक्ट जो थिला 2016 रे आस्तिला गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी कथा में कहिथिले 101st अमेंडमेंट एक्ट मु केते नंबर बिल कहिथिली बिल नंबर केते हां 102nd बिल माने 122 बिल नंबर होची 122 बिल नंबर एटा जीएसटी काउंसिल मते कुआ जीएसटी रो आर्टिकल केते सब 3 थर पढी छन जीएसटी रो आर्टिकल केते 279A 279A वेरी गुड 279A माने रखिबो जीएसटी रो आर्टिकल नंबर 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होची जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एनजेएससी करेक्ट ना भूल सर रॉन्ग सर रॉन्ग ए एनजेएससी कितना में कहिदिले 99 2014 ओके 100 अमेंडमेंट एक्ट हले कोन लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश हमें किछि बांग्लादेश रा पार्ट लेइछे बांग्लादेश को हमर टेरिटरी किछि देइछे तो आम भीतर जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हेछि तो 100 अमेंडमेंट एक्ट इज हमर लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन कहा का भीतर इंडिया और बांग्लादेश बुझी पारलो सो 100 गला 101 गला 102 कौन थिला नेशनल कमीशन फॉर एनसीबीसी कथा हमें कहले ओके एनसीबीसी कथा कहले हमें सो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास ठीक है एटा 104th एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट इन राज्यसभा फॉर 10 years हां एट के कोन हेई रेडी करनु हां भूल अछि सर 8 year हबो ना तो वाला मोर एमजी ठीक अछि ओके ठीक अछि एई थिरे कोन हेतला एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को जो रिजर्वेशन दिया हेतला हटै दिया जेतला प्लस एससी एसटी मानकर रिजर्वेशन को 10 years बढ़ैता तमे फाळे पडिले हबन परीक्षा तमे जदी फाळे पडी के जाइतिबो जे आमे कोन कहितले एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को जो रिजर्वेशन दिया जाइतला सेटा हटै दिया जाइतला सो सेटा भी हटै दिया जाइतला आउ कोन थिला ना एससी एसटी मानकर जो राज्य सभा को हमर जो सीट्स जो कहले सेटा हमर कोन होची बढ़ै दिया जाइतला तो एटा भी हमर ठीक अछि ओके सो आंसर कोन हबो तीनटा पेयर ठीक अछि ओके 105 कोन कहितली 105 अमेंडमेंट एक्ट कोन को स्टेट डिसाइड करिवो कास्ट गुडा को हमर एससीपीसी रे मिसेज इट इज तांको स्टेट को पावर दिया जाइछि सो दे विल डिसाइड व्हिच कम्युनिटी शुड इंक्लूड इन हमर सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट रो लिस्ट रे हमर आसी 106 कोन नारी शक्ति अधिनियम बिल जोटा कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल वुमेन रिजर्वेशन हमर 33% वुमेन रिजर्वेशन जोटा रहउची लोकसभा आउ कोठी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ओके सो नाउ एटा तीनटा ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट ए क्वेश्चन आईएएस रे पढिथिला भी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 categorized the local self government as transfer subject under the control of Indian minister. Government of India Act reverse the decentralization trend by prohibiting the formation of local self-government. One only, okay. So मुते कुह कौन कौन तमे जानी चो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को हमें कौन कहूचे मॉनफोर्ड रिफॉर्म और मॉन्टेगू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म ओके तो मॉनफोर्ड रिफॉर्म बोली हमें कहूचे और मॉन्टेगू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म बोली हमें कहूचे ओके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को
मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर आर कोन ना डायरकी ओके डायरकी रो माने कोन दी डुअल रूल हमर होची माने कोन होची ना जो प्रोविंस हमर अछि प्रोविंस रो सब्जेक्ट को दी भाग रे डिवाइड कराई प्रोविंस कोडा ना जोडा ब्रिटिश कंट्रोल करला प्रोविंस जोडा हमर राजा माने शासन करथले सेटा को प्रिंसली स्टेट करथले ओके सो प्रोविंस रो जो सब्जेक्ट उडा को थिला दी भाग रे गोटे हमर थिला रिजर्व सब्जेक्ट आ गोटे हमर थिला कोन ना ट्रांसफर सब्जेक्ट रिजर्व माने कोडा ना जो गुडा को हमर गवर्नर आउ तांको एग्जीक्यूटिव काउंसिल हैंडल कर जेमिति कि लॉ एंड ऑर्डर हे गला डिफेंस हे गला रेवेन्यू हे गला इरिगेशन हे गला ए सबुडा को किए कंट्रोल करूतला गवर्नर आउ तांको एग्जीक्यूटिव काउंसिल माने मेन डिपार्टमेंट उडा पैसा डिफेंस ए सबुडा तांका हाथे आउ जोडा अदर जो डिपार्टमेंट रहला एजुकेशन हेल्थ ए सबुडा आउ जो पंचायत राज पचारि छी एडा आईएएस रो प्रीलिम रे पडितला पंचायत राज ता को लिस्ट रे पंचायत राज ता हमरो ट्रांसफर लिस्ट रे थिला जो थिरे हमर कोन ना कंट्रोल अंडर इंडियन मिनिस्टर मानको कंट्रोल रे रहथि बहुत चालाक कथा में कहिथिले जे मेन डिपार्टमेंट उडा का से माने रखिले आउ जो उडा का रिस्पांसिबल डिपार्टमेंट हमको दे दिला मात्र पैसा नथला तमे एजुकेशन हेल्थ रो डेवलपमेंट कोन करबो तम पाकरे जदी पैसा नहीं रेवेन्यू नहीं सो वी हैव टेकन द रिस्पांसिबिलिटीज विदाउट पावर हम हाथे किछि पावर नहीं किंतु रिस्पांसिबिलिटी नै गले लोक माने गाड़ी गला आलू काहू कहबे तांको मिनिस्टर अछन एजुकेशन किछि डेवलपमेंट होनी हेल्थ रो किछि डेवलपमेंट होनी पैसा तो तमे रखिलो हम केमति डेवलपमेंट ओके सो एडा हम जो कहले प्रोविंस रो सब्जेक्ट को दी भाग रे डिवाइड कराइतला रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट रे हमर कोडा थिला ए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आ मने रखि था रिजर्व सब्जेक्ट रे कोन थिला लॉ एंड ऑर्डर थिला रेवेन्यू थिला डिफेंस थिला इरिगेशन थिला एउडा को थिला हमर कोठ रे रिजर्व ओके डायर की कथा कहला एडा मन फॉर रिफॉर्म आ ओपीएससी रे आउट क्वेश्चन पडितला इतरे फर्स्ट टाइम पई इंडिया रे बाई कैमरल लेजिस्लेचर के बेस सेंटर ओके मन रखि दा ओपीएससी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एडा मन रख गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 रे हमर फर्स्ट टाइम पे बाई कैमरल माने कोन लोकसभा राज्यसभा वेरी गुड ओके तो दीटा हाउस लोकसभा राज्यसभा जो हमें कहूचे से जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर हमर फर्स्ट टाइम पे केबे आसीथिला ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 रे हमर बाई कैमरल लेजिस्लेचर एटा मॉनफोर्ड रिफॉर्म कहंती डायर के इंट्रोड्यूस हेतिला आउ कोन हेतिला ना तमरो 6 जण रु 3 जण वाइस रैंक एग्जीक्यूटिव काउंसिल रे इंडियन मेंबर ओके सेते बेले हमर एग्जीक्यूटिव काउंसिल टोटल 6 जण मेंबर थिले सेइथिरु 3 जण हमर कोन थिले इंडियन मेंबर ओके आउ कोन हेतिला ना हमर सेपरेट इलेक्टोरेट दिया हेतिला काहा को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जायतिला ना एंग्लो इंडियन सिख क्रिश्चियन आउ यूरोपियन मानन को हमरा दिया जे ओके हमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ै छी पुराना बैच पिला को तो एंग्लो इंडियन यूरोपियन क्रिश्चियन आउ सिख मानन को हमरा सेपरेट इलेक्टोरेट हमरा दिया जे ओके मने रखिबो सब गुडा को पॉइंट जोडा को हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 कथा में कहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ए जो कहि छी रिवर्स द डिसेंट्रलाइजेशन नो जो सेंट्रलाइज जो हमें कहली जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन हमर थिला सेल्फ गवर्नमेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ताको प्रमोट करा जतला आहुरी डिसेंट्रलाइज करा गला नाही कि ताको बंद कर दिया गला आहुरी ताको डिसेंट्रलाइज करा गला सो एइडर हमर कोन ना जो रिवर्स कहि छी एटा को हमर प्रमोट करा गला डिसेंट्रलाइजेशन ओके सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 रो लास्ट ईयर आईएएस रे भी पडला 2024 रो मु पचारु जे मते कहिबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ओके द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कौन इंपोर्टेंट थिला तार तमे कहिलो सर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी फेडरल कोर्ट फास्ट कथा हला तम जोडा परीक्षा रे पडिथिला ऑल इंडिया फेडरेशन माने कोन ना एमाने कहिले आमे प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट मिसी गोटे फेडरेशन करबा आजि का डेट रे आमे कहूचे इंडिया गोटे फेडरल गवर्नमेंट माने सेंटर रहउची ता पेरिफेरी रे स्टेट और यूनियन टेरिटरी रहउची सिमिलरली एमाने कहले जे हमें प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट मिसी गोटे फेडरेशन करबा किंतु राजा माने डरिले कहले जदी हमें आंका संगे मिसी काली हम राज्य नै जिबे सेति भाई ऑल इंडिया फेडरेशन कैन नॉट
माने इट इज डज नॉट केम इनटू एक्जिस्टेंस से केबे हेले भी सेटा सफल हेलानी तेनु ये ऑल इंडिया फेडरेशन कथा कहिथिले सेकंड कथा कोन कहिथिले ना से माने कहले जे जो सब्जेक्ट उडा को छ तीनटा भाग रे डिवाइड करियो आज का डेट रे हम कहै यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट सेते बेले हमर कोन थिला ना फेडरल लिस्ट आउ कोन प्रोविंशियल लिस्ट आउटे कोन ना कॉन्करेंट लिस्ट ओके से जो आमे जो आज का डेट रे आमे जो तीनटा लिस्ट कहूचे से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रो एडा मु 1935 कथा कहूची ओके 35 रो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहूची तो फर्स्ट कथा हला ऑल इंडिया फेडरेशन सेकंड कथा माने तीनटा लिस्ट जो कहले फेडरल लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट हो प्रोविंशियल लिस्ट तापरे हमर प्रोविंशियल जो डायर के थिला हटे दे की कोन करा गला प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया गला मने पका सब सब तक इंपोर्टेंट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया गला सेति पई पूरा डिटेल ले करूची तमे खाली जदी मॉक टेस्ट सुनिबो भी पूरा टोटल डिवीजन हे जिबा उथले ओके जदी जने खाली आगु पढीची एबे जदी खाली मॉक टेस्ट आउ ता डिस्कशन सुनिबो भी प्रीलिम पास कर मु कारण पूरा डिटेल ले डिस्कशन करची 360 डिग्री एंगल में तापरे हमर कोन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो डायर की थिला से हटै दे की प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हमर दिया हे गला आरबीआई असला ओके आरबीआई असला तमरा जो हमें कहूचे यूपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमिशन हमरा स्टेट पब्लिक सर्विस प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमिशन जॉइंट पब्लिक सर्विस कमिशन जो हमें कहूचे यूपीएससी हला ओपीएससी हला जेपीएससी हला यूपीएससी हमें कहले फेडरल पब्लिक सर्विस कमिशन प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमिशन जॉइंट पब्लिक सर्विस कमिशन तो आरबीआई असला आउ कोन ना हमरा सुप्रीम कोर्ट भी सेपरेटेड फेडरल कोर्ट जो हमें कहूचे सुप्रीम कोर्ट भी हमरा ला आउ हमरा रिजर्वेशन कहा को दिया गेला हां ओमेन आउ डिप्रेस क्लास मन को एटा तमरा परीक्षा रे पडितला मन रखिबो ओमेन और डिप्रेस क्लास ओमेन एंड डिप्रेस क्लास आकु कोन करा गला ना रिजर्वेशन दे ओके माने रखिबो वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काउ हमरो संविधान रो मैक्सिमम प्रोविजन हमें कोठू नेइचे ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ओके सो एथिरे कोन हबो ना ओनली वन हिजबो एटा रॉन्ग अछि हला सो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर विथ रेफरेंस टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ए क्वेश्चन हमें ऑलरेडी डिस्कशन करिचे मते को हाँ फास्ट स्टेटमेंट ठीक अछि भूल अछि टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर कितना नंबर आर्टिकल मते को 39 एटा केबे आड हितला 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस एंड फैसिलिटीज इन अपॉर्चुनिटी एटा 44th अमेंडमेंट एक्ट 1970 ठीक ना रॉन्ग ठीक अछि कितना नंबर आर्टिकल मते को 38 सब प्लस ओके 38 रो ए बी सी एमती अछि कि किछि ओके तो देखिबो एंड हमरा टू प्रोवाइड ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन ग्रुप 0 to 6 इयर्स हमर जो अछि एटा 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे ऐड कराइतला कितना नंबर आर्टिकल अछि एटा 45 45 रे हमें कहितले जे 45 रे आगु कोन थिला मु कहितली 6 रु 14 वर्ष पिलांकू कंपलसरी एजुकेशन दिया गला किंतु जेहेतु डीपीएसपी गोटे नॉन जस्टिसेबल स्टेट जदि सेटा इंप्लीमेंट न करूची हमें ता अगेंस्ट कोर्ट को जाई परिबे तो सेति पई सेटा को हटै कि नै कि हमें फंडामेंटल राइट रे रखले आर्टिकल 21 ए रे जोटा कि राइट टू एजुकेशन हमें कहले 6 रु 14 वर्ष पिलांकू फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जिवो सो दैट काहे केटा फंडामेंटल राइट रे रखले ना जदि स्टेट सेटा इंप्लीमेंट न करूची हमें स्टेट अगेंस्ट रे केस करियो तेनु से मैंडेटरी करिया पई बाध्य किंतु डीपीएसपी रे थिले से बाध्य नहीं तो सेति पई हम जो 6 रु 14 वर्ष पिला को नेई गले तो एथिरे कोन हला गोटे मिनिट
सर कोड़े गले अच्छी कुआरे जाइनी अच्छी ओके गोटे कॉल आसला तो रही जाइए ओके ओके सो आमे कौन कले आमे जो 45 कहले 6 रु 14 वर्ष पिला फ्री आ कंपलसरी एजुकेशन 45 रे थिले सेटा हमर हटी गला जते बेले आमे सेठी कौन कले 0 to 6 इयर्स पिला वेरी वेरी इंपोर्टेंट मन रखिबा ओपीएस रे तीन थर पढ़ला नै क्वेश्चन राइट टू एजुकेशन केते नंबर आर्टिकल 21 ए 6 रु 14 वर्ष केते नंबर अमेंडमेंट रेडा आसिला 86 लास्ट टाइम तो थर पढ़ला 86 से अमेंडमेंट एक्ट केबे आसिला 2002 तीनटा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट मन रखिबा ओके so next is to take steps to secure the participation of the worker in the management of industry एटा केते नंबर अमेंडमेंट एक्ट आसिला 42nd 1976 76 रे एटा आर्टिकल नंबर केते 53 वेरी इंपोर्टेंट आईएस रे पढितला जे पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री एटा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे आसितला एंड 43 ए रे एटा हमर थिला अच्छा आमे गोटे गला एटा गला 42nd अमेंडमेंट एक्ट 39 ए 43 ए हाउ कोन 42nd अमेंडमेंट एक्ट थिला हां कोन थिला आउ कोन थिला 48 ए कोन थिला मते को promote एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एनवायरमेंट ओके तो 48 ए भी हमर 42nd ए अमेंडमेंट रे आसीथिला 42nd 48 ए ओके तो एई थिला हमर कोन थिला प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंट ओके प्रोटेक्शन 144 ए भी थिला 42 रे वाइल्ड लाइफ और एनवायरमेंट आउ कोन थिला 144 ए हमें तो कहले 43 ए हला 48 ए हला 39 ए हला तो एडा ए तीनटा थिला आउ किसी थिला की सर 144 ए थिला 144 ए यस सर ना डीपीएसपी कथा हम पचारु छी वेरी गुड मनस्मिता 39 एफ कौन को 39 एफ 39 एफ कौन थिला हां चिल्ड्रन सर अपॉर्चुनिटी 39 ए हो जी फ्री लीगल एड टू पुअर माने 39 नो सब क्लॉज अछि ए बी सी डी ई एफ ओके आउ एटा कोन ना एमिति 39 ए बी सी डी ई एफ एमिति अछि सब क्लॉज आउ डेला 39 ए एमिति अछि जो फ्री लीगल एड टू पुअर होछि 39 ए ओके वेरी गुड मनस्मिता क्रिएटिंग हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रन एटा भी हमरो ऐड कराइतला 39 ए ओके सो 39 ए होछि क्रिएटिंग हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रन ओके किछि भी डिफिकल्ट डे बाय डे होछि जोडा परीक्षा रे पढी छी तार 42 पढुची सबले डीपीएसपी रे 4 डे तक जोडा मने तुमको लागु छी जे मने रहउनी सेटा ही परीक्षा रे पढी ओके ठीक अछि सो हमर इथे केतडा ठीक हैला ताले एटा ठीक अछि एटा ठीक अछि एटा भी ठीक अछि तो केतडा तीनटा हमर ठीक अछि 49 consider the following statement with reference to prohibition and chivalry prohibition and chivalry तमे एटा कोडी सुनिछ तमे prohibition chivalry different reads आर्टिकल 32 ओके डिफरेंट रीड्स हम जो कहले जे जदी तमरा फंडामेंटल राइट वायोलेशन होची फंडामेंटल राइट जदी वायोलेशन होची तमे सुप्रीम कोर्ट को केतना नंबर आर्टिकल जाई परिबो डायरेक्टली 32 रे हाई कोर्ट केतना नंबर आर्टिकल जाई परिबो 226 सो सेति भाई आर्टिकल जो 32 को हमें हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहते डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जोडा उमार्स रे पढितला व्हिच article is known as the heart and soul of Indian Constitution. It is article 32, जोटा कि right to constitutional remedy. If any of your fundamental right is violated, you can directly approach to the Supreme Court under article 32. तो 32 रे गले से कौन करिवे ना तुमको न्याय देबे केमिति न्याय देबे ना तांको पाखरे डिफरेंट रीड्स अछि हमें कहले habeas of corpus mandamus prohibition पेरेंट हो एमिति पांचटा रीड्स से माने इश्यू करि परिबे ओके तो हमर प्रथम हैला मांडा आगे जो habeas of corpus रो मीनिंग कोन हां
To have the body. To have the body. To have the body तार मीनिंग होची you cannot illegally detain a person. तमे गोटे लोक को इलीगली डिटेन करके रखि परिबो नाही। कोर्ट चेक करिबो जदी तमे देखिबे जे तमे इलीगली डिटेन करके रखिछ इमीडिएट तुमको रिलीज करिया पई ऑर्डर देबो। किबा जदी से चेक करियो कि नाही तुमको ए जो अरेस्ट करा जाईछि एडा लॉफुली करा जाईछि आ ताको रखा जाऊ तो सी डिसाइड करी। सो टू हैव द बॉडी हमें कहले हबियस ऑफ पर्पस मैंडामस। मैंडामस कोन we command रा मीनिंग होची जे काहे कि तमे तमरो ड्यूटी ठीक रे करू। तमरो तमे जने डॉक्टर you should be in the hospital from 9 to 4 o'clock to give your service। गवर्नमेंट रा एम्प्लॉय तमे सेठी प्राइमरी हेल्थ केयर न रही कि तम निज क्लिनिक रे कोन करू तो तम अगेंस्ट रे कोन करे आबो ना एक्शन नै परि तुमको सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन ऑर्डर दे परिबो। ओके सो मैंडामस हला कोन we command। तमे जदि तम ड्यूटी ठीक रे करू न ताहाले सुप्रीम कोर्ट तुमको हमर डायरेक्शन दे परिबो ऑर्डर दे परिबो। ता परेला प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन ने कोन हमरो प्रोहिबिट करिबो तो प्रोहिबिशन कोन हुए हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को हमर डायरेक्शन दिए कि यू शुड नॉट डू दिस। एइडा तम जुरिडिक्शन भितरे नथिला जे तमर एक्सेस जुरिडिक्शन करी कि तमे काहे कि तमर गोटे काम तमर सेटा लिमिट नै धर तमे कहबा सेंटर आ स्टेट भितरे गोटे डिस्प्यूट होउची किबा स्टेट आ स्टेट भितरे गोटे डिस्प्यूट होउची सेही भलिया केसटा कोनसी लोअर कोर्ट की हाई कोर्ट सुनानी करि परिबो नाही। एटा किए करिवो केवल सुप्रीम कोर्ट करिवो जोटा कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रे आसुची। जदि गोटे हाई कोर्ट स्टेट भितरे जो डिस्प्यूट होउची सुनानी करूची ताले सुप्रीम कोर्ट कहिबो प्रोहिबिशन इट इज नॉट इन योर माने जुरिडिक्शन और तमर जुडिशियल कैपेसिटी भितरे नाही। व्हाई यू शुड टेक दिस केस कम पे तमे नेलो। सो प्रोहिबिशन ने को केस गुडाक तमे न करिवो इट शुड बी बियॉन्ड योर जुडिशियल कैपेसिटी। प्रोहिबिशन ने प्रोहिबिट करे। सिटोरियर कोन करे ना जदि केस गुडा पेंडिंग है कि थाय ओडे लोअर कोर्ट रे तो सी आइदर निजु को ट्रांसफर करी कि सेडा को डिसीजन दे दिए किंबा तांको कोए जे जल्दी जल्दी तार डिसीजन दे। प्रोहिबिशन सिटोरियर रे कुहे जे तमे एडा करा बोली प्रोहिबिशन ने कुहे एडा तमे करनी। ओके सो एडा हो जे हमरो तो एबे तमे क्वेश्चन करो। ओके this can be issue against judicial and quasi judicial yes तो judicial out tribunal against भी हमरा करा जाय परिबो prohibition and statutory दीटा देखो। they can be used to take preventive as well curative action। they are not available against legislative body and private body। एटा तीनटा ठीक अछि देखो prohibition ता होची preventive action। ओके and curative action हमर जो कोहा होची एटा हमर कोन होची ना क्यूरेटिव एक्शन ठीक अछि। ए जो हमें कहले जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल ओनली सेटा भूल अछि। जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल किंतु हमर पर जजमेंट रे एटा को कोन करा जाईची ना इवन इफ हमर अदर बॉडी गुडा को हमर एटा को ओके अदर जो सुप्रीम कोर्ट हमर कोन करिछि ना अदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस गुडा को भी एटा हमरा करिछि। जे 1991 जो जजमेंट आसीबो सुप्रीम कोर्ट कहला केवल जुडिशियल आ क्वासी जुडिशियल में एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी तमे धर जो गवर्नमेंट रो जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी अगेंस्ट रे भी एटा हमरा इशू हेई परिबो कोडा ना सिटी रे। ओके तो सेति भाई हमरा ए जो ओनली लिखा है जे सेटा रॉन्ग। ओके आउ दीटा का स्टेटमेंट हमरा ठीक अछि। सो आंसर कोन हेतबो सॉरी ओनली हमरा 3 टा ठीक अछि। तो जो प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव नो एटा प्रोहिबिशन टा ओनली प्रिवेंटिव क्यूरेटिव नहीं। ओके सो ओनली 3 इज द करेक्ट आंसर हमरे। क्वेश्चन नंबर 50 तमरा कोऑपरेटिव सोसाइटी टा को पार्ट रे मेंशन अछि। हां 3 and 4 3 रे कोडी हमरा पार्ट जो डिस्क्राइब हिची। वेरी गुड हमरा कोऑपरेटिव सोसाइटी कथा हमरा फ्रीडम जो 19
जो आर्टिकल 19 ने हमर जो सब क्लॉज अछि सो सब क्लॉज 19 हमर एटा मेंशन अछि पार्ट 4 रे हमर कोऑपरेटिव सोसाइटी कथा कहआ जाय छी जोटा कि केते नंबर आर्टिकल हमर पार्ट 4 रे 43B 43 बी केबे को अमेंडमेंट एक्ट रे आस्तिला एटा 97 2011 लास्ट ईयर मन रखिबो ओके तो एटा हमर आर्टिकल 19 रे हमर अछि जो फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी फंडामेंटल राइट रो आर्टिकल 19 रे हमर अछि डीपीएसपी रो ओके हमर आर्टिकल 43 बी डीपीएसपी रो अछि ओके सो दीटा आकरे हमर एटा तो फंडामेंटल ड्यूटी रे कोडी कोऑपरेटिव सोसाइटी कथा नाही सो आंसर कोन हे जिबा हमर 1 and 2 हे जिबो करेक्ट आंसर ओके सो एटा केबे आस्तिला 43 बी मन रखिबो एटा 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 ठीक अछि बुझि पालो सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 17 abolition of untouchabilities पढ़ा क्वेश्चन दा पढ़ा ओके सी कहउछन मनस्मिता पंकजिनी सी सौम्यरंजन सी सी हो सर सी हबो Yes, sir. ओके सो सेकंड स्टेटमेंट हमर कोन पई भूल डिफाइन दे दी थी सर अनटचेबिलिटी से हमरा कॉन्स्टिट्यूशन रे डिफाइन नहीं ओठी अनटचेबिलिटीज वर्ड रो तमे डेफिनेशन हमरा नाही तेनु फास्ट ला एटा होची मन रखिबो इट इज द ओनली एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट प्रेजेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ अगेंस्ट रे कोनोसी रेस्ट्रिक्शन ए सब नहीं ओके सबुठी एक्सेप्शन अछि आ अगेंस्ट रे कोनोसी एक्सेप्शन और आ अगेंस्ट रे कोनोसी हमारा रेस्ट्रिक्शन नहीं आ जो अनटचेबिलिटीज वर्ड ता हमारा संविधान रे डिफाइन है तेनु ए जो कहू इट डिफाइंस द अनटचेबिलिटीज सो अनटचेबिलिटीज वर्ड हमारा कोन हमारा डिफाइन हेनी संविधान रे तापरे पार्लियामेंट has exclusive power to legislation against practice of untouchabilities तो ता पई untouchabilities against रे ए माने कोन जो माने प्रैक्टिस करछन ता पे हमरो लॉ नै केसी परिबो इट इज अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल वेरी इंपोर्टेंट लाइन हमर देखो फंडामेंटल राइट गुडा का हमर कहा सिटीजन माने को अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट यदि गवर्नमेंट किसी भूल भाल कला ता अगेंस्ट एक्शन नबा एई केस रे गवर्नमेंट एज वेल एज इंडिविजुअल तमे गोटे निजे एज ए इंडिविजुअल ताहाकू अगेंस्ट अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करि परिबनी कि छुआ अछुआ भेदभाव जदी क्रिएट कला तुमको जदी ता तम अगेंस्ट यदि केस कला तमे 1 ईयर जेल जदी कोनोसी एमएलए एमपी ठिया होची अनटचेबिलिटीज केस रे फसीसी से आउ ठिया आइ परिबन ता कैरियर बर्बाद हो सो वेरी इंपोर्टेंट आर्टिकल होची आर्टिकल 17 जोटा के होची एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी सो आंसर कोन हिजबो 1 3 and 4 हिजबो हमरो करेक्ट आंसर इक्वालिटी एटा परीक्षा रे आईएस रे पडितला वन ऑफ द इम्प्लिकेशन ऑफ इक्वालिटी इन द सोसाइटी द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज बावनो आ कोन रिस्ट्रेन आइडियोलॉजी कंपटीशन एब्सेंस ऑफ ओके तेनु एटा होची इंपोर्टेंट होची माने रखिबो सो एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज इज इक्वालिटी इक्वालिटी हमें कोन कहबा हमें काहा को प्रिविलेज दबानी तमे वीआईपी बोली तुमको आगुआ लाइन रे छाडी दबा हम वीआईपी बोली हमें कोन हो तुमको स्पेशल ट्रीटमेंट तो एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज इक्वल बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन बाय द लॉ अगर समस्त समान काहा को स्पेशल प्रिविलेज दबानी स्पेशल ट्रीटमेंट दबानी
So absence of माने one of the implication of equality in a society मन रखिबो IAS 2020 रा क्वेश्चन एटा थिला absence of कोन privilege. Okay, absence of privilege. Same question पढ़िथिला the implication of जदि हमें पढ़िबो जे liberty रो implication कोन absence of restraint. Same question जदि liberty पढ़िबो मन रखिता किछि तुमको restricted करा जाउनी restrain करा जाउनी तमे जा चाहछो एक्सप्रेस करछो liberty of thought expression belief faith and worship जो जहा चाहछो तमे एक्सप्रेस करि परछो जहा चाहछो तमे हमरो वर्शिप करि परछो जो धर्म चाहछो नै परछो तो absence of restraint होची तमरो liberty absence of privilege एडा होची हमर कोन equality. Okay, which article of the Indian Constitution eradicates untouchability? परीक्षा रे पढिथिला आईएएस रो प्रीलिम रे डायरेक्ट क्वेश्चन आईएएस रो प्रीलिम रे पढिथिला ओएस रे पढिथिला वेरी इजी क्वेश्चन तमे देखो आईएएस रो प्रीलिम क्वेश्चन तो कितना बार आर्टिकल एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी 17 Article 17. भलो माने हेजिबो which of the following is listed among the directive principle of state policy हमर पार्ट 4 of the Indian Constitution कोडा हमर directive principle of state policy रे मेंशन अछि दीटा तो तुम जानि पारुछो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क तुमे एटा जानिछो यूनिफॉर्म 1 2 4 हां 1 2 4 कोन कहउछो केते कोन कोन 1 and 2 होबो सर 1 and 2 सो हमर एटा हिजबो कोन ना तमरो 1 and 2 हिजबो हमर करेक्ट आंसर. ओके, स्मॉल फैमिली नॉर्म एजुकेशन फ्रॉम मदर टंग एउडा को लेखा नै हमें जो पढिले फंडामेंटल रिसर्च डीपीएसपी रे पढिचे एटा मेंशन नाही. यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 रे अछि एटा 39 रे अछि तो 1 and 2 हिजबो हमर करेक्ट आंसर. सो बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, वेलफेयर स्टेट एम्स टू Sir, A. First I was maximum welfare of maximum. ओके, एटा भी यूपीएससी रो क्वेश्चन थिला. वेलफेयर स्टेट माने मैक्सिमम वेलफेयर टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल. सर मदर टंग कथा कोड मेंशन अछि कि कोडा 4 नंबर रे सर जो मदर टंग प्राइमरी लेवल सेटा कोड मेंशन अछि कि मेंशन माने डीपीएसपी रे नाही कोड अछि सर हमरा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी गोटे हमरा अछि तो सेइथिरे हमरा एटा मेंशन अछि. ओके, ओके, सो एटा हमरा ए वेलफेयर स्टेट हम कांसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट कथा कहिथिले कोथिरे अछि हमरा डीपीएसपी रे. ओके, कांसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट कथा कहले हमरा डीपीएसपी रे अछि. फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कोडा हमरा फिफ्थ शेड्यूल एरिया रे आसीबो एटा किए डिक्लेयर करंती गवर्नर प्रेसिडेंट सर प्रेसिडेंट. So according to the fifth schedule of the Indian Constitution, the expression schedule area means such area as declared by president. अच्छा, sixth schedule कौन अछि? हाँ, केतरा स्टेट को चारिटा स्टेट रो शेड्यूल एरिया और एरिया असम मेघालय त्रिपुरा असम मेघालय मिजोरम मिजोरम त्रिपुरा. आसाम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा ए चारिटा एक आगुरु जम्मू एंड काश्मीर भी थिला किंतु हटे दे. ओके, consider the following statement to promote international peace and security, to uphold the protect the sovereignty unity integrity of the India, to maintain just and honorable relation between the nation, to encourage settlement of international dispute by arbitration. कोडा हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे हमारा मेंशन अछि. To maintain only 3
just and honorable relation between the nation. To uphold, protect sovereignty, unity, integrity of the nation. एटा कोउथरे मेंशन हां এটা fundamental duty फंडामेंटल ड्यूटी रे लिखा है to uphold 51A. हां 51A फंडामेंटल ड्यूटी रे लिखा है to uphold okay and promote the sovereignty, unity, integrity. Okay, to promote international peace and security. Article 51 51 sir. हाँ 51 51 DPSP रे अच्छी. Okay. And international dispute by arbitration एटा DPSP रे अच्छी. So कौन आबा आंसर only 3 तीनटा हमारा ठीक अच्छे. Separation of judiciary from executive. Article 50 Article 50 Article 50. Okay. 49 ने कौन अच्छी? 49 sir. Protection of monuments. monuments. Okay. Protection of monuments है हमारा. Okay. अच्छा आर्टिकल 50 कौन हमर गला सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी. 51 कौन इंटरनेशनल पीस. 40 कौन विलेज पंचायत. ओके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत. 45 कौन ना चाइल्डहुड केयर 0 to 5 years पिलान को हमर लीग चाइल्डहुड केयर हमर दिया जाय. Okay, so next question होची in a parliamentary democracy is a form of government in which? option D आइडा परीक्षा रे पड़ी थिला आईएएस रो प्रीलिम रे. एनु पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे मु 3-4टा पॉइंट तुमु कहितली. कोन तुमु कहितली मेजॉरिटी पार्टी रूल्स. ओके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पांसिबल टू लोक सभा ओनली. Okay, Rajya Sabha में as long as they have the majority in Lok Sabha, they will be in the power. The moment they lost the majority in the Lok Sabha, semaniko government भांगी थी. 2 minutes. Okay, so they lost the majority in हमारा जदि लोक सभा रे majority loss हेगला ताले से माने. Okay, आउट हमें कौन कहितले जे हमारा एटा भी तमे कहि परिबा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अकाउंटेबल टू एंड रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेचर. Okay, or executive are responsible to the legislature. So answer कौन है जीवो D है जीवो हमरा. Okay, so ठीक अछि सार असलेनी क्लास करिवे एंशिएंट हिस्ट्री. सो मु नेक्स्ट क्लास में 60 रु तमरा क्लास तक. ओके 55 रो आंसर टा कहि कोडा कोडा 55 A. कोडा गला 55 A. हां मैक्सिमम सिक्योर मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ मैक्सिमम नंबर. ओके ए हबा आंसर. ओके ए हि जीवा हमरा करेक्ट आंसर. ठीक अछि हमें नेक्स्ट क्लास रे काली पुनी भेटा हबा. ओके सो एवरीडे रहइबा मझिरे 2 दिन ब्रेक हेतला किंतु हमें कंटीन्यूअसली सब दिन हमें डिस्कशन करि करि चल. ओके टाइम लागू किंतु हमें पूरा डिटेल रे डिस्कशन करूचे 360 डिग्री एंगल करूचे. सो दैट तमे जदी एत्ती के डिस्कशन पॉलिटी रे करि दबो दैट इज एनफ. जहां भी क्वेश्चन पडिबो यू विल एबल टू आंसर. ओके थैंक यू. थैंक यू सर.